try to do something unique, right? Because now this field is pretty saturated. Every other person is a creator, which is a good thing. This field is booming, right? It's such a big economy. But try to do something unique, because otherwise तुम अगर वो ही कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, you will not stand out. So try to figure out a way to stand out. रेडियो सिटी 91.1 पर कभी कभार ऐसे होता है कि हम लोग जो सोशल मीडिया में देखते हैं उससे कहीं ज्यादा गुणवंती होते हैं हमारे कुछ लोग, और मुझे ऐसे लगता है आज की मेरी गेस्ट वैसी ही है, अ फैशनिस्टा, बट आई वुड थिंक विद अ लॉट ऑफ सब्सटेंस. और मैं तो शौक में अभी भी इस बात को लेकर हूँ कि जूही ने अभी 1 साल पहले ही जन्म दिया अपने बेटे को, एंड शी इज लुकिंग लाइक सुपर मॉडल ऑलरेडी. जूही, वेलकम टू अर्चुका शो एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन just being a winner in life by living a very wholesome life. क्या मैं सही बोल रही हूँ? Absolutely. Thank you for having me. So excited to be here. अच्छा, एक बात बताओ, सच्ची बताओ कि नंबर 2, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी में आपकी करने वाली थोड़ी देर में, 11 नंबर के लोग ना बहुत मैनिफेस्टर्स होते हैं. बच्चन साहब को देख लीजिए, नंबर 2 है. शाहरुख खान को देख लीजिए, नंबर 2 है. आपने वो बचपन में वो कितना आप आईने के सामने या शायद डॉल्स के बाल के साथ क्या किया कि आज आप यहाँ हैं? आई थिंक पहली बात तो बचपन से ना मेरी सबसे बड़ी आइडल मेरी मॉम रही है. ओके. ग्रोइंग अप मैं उन्हें हमेशा देखती थी, बहुत अच्छे से तैयार होके जाती थी. मॉम्स अ हेयर स्टाइलिस्ट, तो मूवी सेट्स पे बहुत रहा करती थी. शी इज वेरी सुंदर आल्सो, मुझे बहुत प्यारी लगती है. सो मॉम हैड her own, I don't know, just some sort of a charm. So I always wanted that कि मैं कुछ भी करूँ, मुझे ऐसे इस तरीका का कॉन्फिडेंस चाहिए. एंड मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया बचपन में. आई ट्राइड माई हैंड एट स्टाइलिंग एट मैगजीन, आई ट्राइड स्टाइलिंग एड्स. मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं, बट द थिंग इज आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन मुझे पता चला कि मेरी कॉलिंग क्या है. पर एक चीज़ बहुत क्लियर था कि मुझे खुद का कुछ करना है. You wanted to be your own boss. Exactly, and I wanted to be in fashion, so I manifested that in many ways. But then this career that I sort of got into, back in the day, this wasn't really a career, right? Like it was just something that people were doing for fun. So that way I kind of lucked out that I started content creation at the right time. But starting a clothing brand was a big dream of mine, which I'm doing now, Arabella. So I'm kind of doing that, simultaneously. I'm going to wear all your creations. I can't wait. क्योंकि आप जैसे dressed up हैं, बहुत chic, and it's still yet understated. मतलब बहुत कम होता है कि आप classy भी लग रहे हो, पर बहुत understated भी लग रहे हो. क्या इसमें effort जाता है, या ये आप कुछ चीज़ें देख के manage करते हो? कैसे आपका एक creativity वाला एक corner? I mean, बिल्कुल बहुत effort जाता है. Funnily, like the no effort look is the way to go. तो मतलब मेरी पर्सनल स्टाइल भी वैसे है कि आई डोंट वांट टू लुक लाइक आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट ऑफ कोर्स इट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट टू लुक दिस वे. यू नीड हेयर, मेकअप, एंड अभी टुडे तो आई हैव नॉट डन मच, बट यू नो व्हाट आई मीन, कि whatever you put out there, it always, no matter what it looks like, it needs effort, some sort of effort. क्योंकि you've just become a mother, और काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी. क्या है वो चीजें जो आपको समझ में आई हैं? क्योंकि हमारी मम्मी ये सारी डायलॉग्स डॉट वाले हमको देते हैं, फिर जब हम लोग माँ बनते तब हम बोलते हैं हाँ माँ ने कहा था. कोई ऐसे पेन पॉइंट्स हैं? Absolutely. तो आई थिंक अभी तो मेरी जर्नी जस्ट शुरू हुई है, बट द बिगेस्ट थिंग इज दैट मैंने मॉम गिल्ट बहुत जल्दी महसूस किया, बिकॉज माई मॉम स्टार्ट गोइंग टू वर्क व्हेन आई वाज वेरी यंग, एंड मेरी दादी के साथ मैं रहा करती थी, एंड सिमिलरली मैं भी I started going to work I took my first international trip in Aryan was 3 months. Wow. It was very tough on me. कहाँ गए थे आप? I went to Milan for Fashion Week. अच्छा. And for me I felt like मुझे जाना है, because मैं तब नहीं जाती ना तो मैं शायद वापस नहीं जा पाती. Exactly. So I had to rip the band-aid off. My husband is so supportive, so he came with me on that trip. अरे वाह. Half the trip I was either pumping, I was breastfeeding that time, or I was crying because I was so guilty. But I felt like I'm glad I went there. तो आई फील लाइक सबसे ज्यादा तो मॉम गिल्ट. आई अंडरस्टैंड व्हाट माय मॉम यूज्ड टू से कि इट्स नॉट इजी. और उन्होंने भी एज अ वर्किंग मदर सब एक्सपीरियंस किया है. एग्जैक्टली. पर आजकल एक बहुत पॉजिटिव चैट है अराउंड दिस, एंड आई वांट टू आस्क यू अबाउट इट, कि वर्किंग मदर्स कहते हैं, जैसे करीना ने एक इंटरव्यू में भी कहा, और मुझे भी इंट्यूटिवली बहुत सालों से ऐसे लगता है कि जब माँ आज के ज़माने में चूज़ करती है अपना काम, इवन इफ दे आर मदर्स,
वो अपने एक्चुअली बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन दे रही हैं टू बी वोक, यू नो. क्या आपको लगता है कि ये आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में भी आपके लिए था फॉर योर मदर? एब्सोल्युटली. आई फील लाइक शी सेट एन एग्जांपल फॉर मी. एंड जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी मॉम मेरे लिए आइडल थी एंड है, सिमिलरली आई फील लाइक आर्यन विल बी प्राउड ऑफ मी. मे बी अभी वंस ही grows up a little, when he's a toddler, maybe he'll say ki mama don't go to work, you know, because he's a baby. But eventually I feel like he'll be proud, and he'll realize that, you know, how hard, you know, my husband and I are working for his future. So I think, I think it's a good example to set. You know, I'm going to do a quick numerology. It's very interesting कि कभी भी जोई ने ये कराया नहीं है. And it's funny क्योंकि as a number 11 ये actually खुद भी बहुत intuitive हैं. आपकी खुद की इंट्यूशन आपके कितने काम आई है? बहुत ज़्यादा. आई फील लाइक, यू नो, मैं किस तरह की इंसान हूँ. लाइक आई डोंट ओवर थिंक इट इन द सेंस कि अगर मैंने कुछ सोच लिया ना मुझे करना है, एग्जैक्टली, तो मैं ज़्यादा लोगों से पूछती नहीं कि व्हाट डू यू थिंक, मैं कर लेती हूँ. तो आई थिंक इंट्यूशन का ही गेम है ये शायद. वाओ. ओके, सो लेट मी बिगिन. सबसे पहली बात, लाइक आई सेड, यू आर अ मैनिफेस्टर. क्योंकि नंबर 2 के जो लोग होते हैं वो विजुअलाइज बहुत इजीली कर लेते हैं, क्रिएटिव होते हैं. तो जो आपने विजुअलाइज किया वो हो जाता है कहीं ना कहीं. इट्स मैजिक. नंबर 2, आई थिंक नंबर 2 का 11 नंबर लोगों का जो है मून साइकिल के साथ बहुत लेना देना है. तो मूडी बहुत रहते हैं. कभी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे तो कभी आपको लगेगा है, अब कोई कहेगा ये तो सबके साथ होता है, बट 2s के साथ बहुत स्ट्रांगली होता है. सो आई एम नॉट सेइंग डिप्रेशन पर्टिकुलरली, बट कभी कभी ऐसे लगेगा ब्लैकआउट हो गया है क्योंकि क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है कि कभी कभी वो डार्क मोमेंट्स में आपको लगेगा व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. बट दैट्स समथिंग यू नीड टू सी एज अ क्रिएटिव ब्लॉक मोर देन एनीथिंग. आई फील लाइक ड्यूरिंग दोस टाइम्स आई फील लाइक, अरे यू नो, सडनली आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट ऑल कि एम आई डूइंग इनफ. दैट इज आल्सो आई फील अ पार्ट ऑफ बीइंग इन द क्रिएटिव फील्ड. बिल्कुल. यू नो, और आपको हमेशा यू हैव टू बी माइंडफुल कि आज अमावस्या है, आज फुल मून है, क्योंकि आप स्लीपलेस भी हो सकती हैं because work can keep you up, but also your mind is overactive with ideas, and that's why some nights you don't sleep at all. But the good news is कि because you're a workaholic, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि you know otherwise people can get very tired and drained. But with you, you're a battery. No, but that's true. When I'm like overthinking and how at night I feel like I get the best ideas, and then I message my team at 4 in the morning. Listen, कल ये shoot करते हैं. तो I feel I work the best at night only. But आपकी सबसे प्यारी बात, and this is where what I would love for you to take back, is कि आप क्योंकि हार्ट फेल्ट होती हैं ज़्यादा, एंड जब आप हार्ट से ऑपरेट करते हो तो आप बहुत खुश हो जाते हो, बिकॉज यू somebody who loves to be loved and be loving. तो this is something you must keep very alive about you, क्योंकि the heartfelt things you do, say and act out of will keep you happy. तो ये to make you a more fulfilled person. तो ये आप भूलना मत कि प्यार देना लेना यही आपका मेन स्टे है, मेन कोर्स है. ये एक्चुअली इज द रीजन यू आर डूइंग व्हाट यू डू. एब्सोल्युटली. और मैं वेट कर रही हूँ मेरे हैम्पर के लिए from your line. I can't wait. Yeah, I'd love to see you in it. Very few people have class, and you reek of it on your Instagram. Thank you. That's so kind. Now to come to creation. By the way, न्यूमरोलॉजी में आप मुझे कितने मार्क्स दे रही हैं? 10 on 10, क्योंकि फर्स्टली मतलब ये मैंने पहली बार किया, as I told you, and wow. I didn't tell you the main good news. Okay. ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में बहुत होगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, because you crave for something new and challenging, and you like to see new things and new places. So I'm very impressed कि आपने उसको इतना अट्रैक्ट किया है. क्रिएशन कितना टाइम लगता है, क्या इन्वेस्ट करना होता है, एंड क्योंकि आप एक अकाउंट चला रहे हो जो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है एज अ कम्युनिटी, क्योंकि इतने लोगों को लगता है कि उनके अंदर है, दे हैव इट व्हाट इट टेक्स. व्हाट आर योर टिप्स इफ आई हैड टू पुट इट इन 5 पॉइंटर्स? आप क्या बोलोगे? I think number 1 is patience. You know, a lot of times people don't realize that when we started, we didn't do it because हमें लगा था कि ये हमारा जॉब है and you know हमें ये perks मिलेंगे. हमने बस किया because it was a passion. I love dressing up, I love taking photos, and I did it. You know, so I think put your head down and just be patient and do it because you're having fun. That's the number 1 tip. And the second tip would be to try to do something unique, right? Because now this field is pretty saturated. Every other person is a creator, which is a good thing. This field is booming, right? It's such a big economy. But try to do something unique, because otherwise तुम अगर वो ही कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, you will not stand out. So try to figure out a way to stand out. I always say patience and, you know, what else? Consistency.
And I think just put your head down and don't leave your 9 to 5 job in the beginning. I think in the beginning don't, right? Like till the time you don't have something concrete going on, give it some time, because for some people it clicks and for some people it doesn't. Here's the main question, the shooting. क्योंकि बहुत जगहों पे मैं देखती हूँ कि लोग viral जा रहे हैं because content funny है या जो भी. In your case, a lot has to be aesthetically shot. और अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर वो भी स्टाइल क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं, how do you initially invest? Not too much, but also you need to have a product that looks chic. Okay, so firstly, get a good phone with a good camera and your set. Second, उसमें वो initial investment है. Initial investment मतलब एक phone का camera is good enough. Don't get a fancy camera to begin with. पर आपके घर वाले अगर आपको शूट नहीं करना चाहते हैं तो आप tripod. I mean, मैं उस पे भी आती हूँ, पर पहली बात तो like sunlight is great, you know, so try to use natural lighting. Lighting का game है, right? Like if you're using, हमारे देश में तो कितनी sunlight है. हाँ, exactly. तो you know, if you're shooting at the right time and if you have good light, it's gonna look great. Skin अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा. And then try to get help. Don't feel shy. Even when you're solo traveling, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक बार मैं एक ट्रिप पे चली गई थी जहाँ पर my friend couldn't make it and I was like, अब मैं क्या करूँ? So I started asking people around me to help me take my photos and they were fab and such good memories. So don't feel shy. You know, I feel like sometimes it's just in your head कि आप overthink कर रहे हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे. But people don't care and people are more than happy to help you. If you look like Juhi, like a model, then they'll be happy to help you. You know, क्योंकि I also feel कि there is a lot of people who want to do this in less monies, like I just said. The fashion industry itself कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि it limits you. अभी ये है आपको बट इतना खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए. तो आपके tips for people जो सुन रहे हैं इस शो को और fashionable बनना चाहते हैं in less budget. See, firstly, I don't think you need to spend a lot of money to look fashionable. Even if you have the most basic wardrobe and you're kind of building it up, like, you know, just get good basics and maybe start investing in some jewelry, some statement accessories, bags. Then it's just about how you kind of play with it, right? I always tell people that style and being trendy is very different. You can always, like, you know, look at people's trends and like adapt to it, but then you can't kind of copy anyone's style. You need to have your own style. So I feel like how well you kind of show off your style, it's totally upon you. You don't need a lot of money काफी heartbreak हो रहा है क्योंकि आजकल लोग मुझे बोलते हैं तुम साड़ी में ही बेस्ट लगते हो, साड़ी पहनो. पर साड़ी मेरा फेवरेट सिलुएट है. मतलब any time of the day अगर मुझे आप साड़ी पहने बोलो तो I'm more than happy. वो सबसे बेस्ट लगता है. I'm more than happy. But I'm also somebody who likes variety. So if I had to ask you, मुझे अगर 1, 2, 3 slot में after साड़ी क्या है वो चीज़ जो मुझे पहननी चाहिए? What would you? Listen, Arjun, I think you can pull off everything. I don't know किसने आपको कहा है कि आप. मेरे friends ये भी बोलते हैं कि तुम ना ऐसा एक रग पहन के आ जाओ तो भी अच्छी लगोगी. Yeah. But it's not about that. I mean, जैसे एक body type होता है. Right. And then you know कि अच्छा ये इंसान पे ना ये ड्रेस या ये पैंट ऐसा कुछ अच्छा लगेगा. So what do you visualize? So you know that is something that you can only tell me because it's about what makes you feel good and you know like you always have that one favorite pair of jeans because you know it makes you look snatched or like so anything that makes you feel good and anything that you're comfortable in is what you should go for and then it's about how you dress it up or dress it down. Now let's talk about Emily in Paris. Oh my God, I am so impressed कि आप वहाँ थे, उनको rapid fire questions पूछ रहे थे. क्या है इस शो में जो हम सब पागल हो गए? Honestly, मुझे नहीं पता because obviously it's Emily in her little bubble and like her La La Land, but it's just so like you know, you kind of can disconnect from the real world and believe that ऐसी दुनिया भी होती है and it's just fun. But like मेरा पति एक ही कमेंट कर रहा है, इसको इतने कपड़े मिल कहाँ से? ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर संदूक है नीचे. Literally. मतलब मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि एमिली पहली बार तो बजट पे आई थी पेरिस एंड द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट शी इज वेयरिंग लाइक अलाया एंड ये मतलब किस तरह के ब्रांड्स पहन रही है. हम लाइक कैसे तो वो तो क्वेश्चन हम सब पूछते हैं. बट दिस इज अ ग्रेट. बिफोर आई गेट बैक टू एमिली आई विल फॉरगेट दिस वन. टेल अस 3 brands that you discovered and they're very unique और शायद लोगों को ज्यादा पता नहीं है लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़े होने वाले हैं. लाइक यू नो एक टाइम पे आई एम श्योर Desigual was one of them. अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. बट आई फील लाइक यू नो वी डोंट इवन हैव टू लुक टू फर्दर आउट. Like I feel India में कितने बढ़िया brands हैं. It's unreal. Like lately there are brands like there's Moonray, there's Lovebirds, there's so many. There's Annie Clothing. Like these are all like Indian brands, right? Wow. Even Arabella. I mean, come on. मेरा खुद का brand. But you know there's so many amazing Indian brands and they're doing such fab work. I'm so glad. I'm going to make a reel on this क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारे लोगों को हम लोग. And they're all very well priced.
You know, and I feel like बहुत बार क्या होता है कि you don't know where to shop and आप वही घिसा पिटे, मेरे को नाम नहीं लेने, but you know like those high street brands where you go and shop. But कब आएगा वो time जैसे अभी crave for maybe a Sunidhi type to become an international star, जैसे वो एक feeling है. In the world of fashion हम क्यों उतने बड़े नहीं होते जब तक कि आप एक Sabyasachi level के किसी international star को आपने dress up करा, you know, like he did for like, you know, actually I can talk about this from my own experience and from my own industry, right? Like जब हम globally fashion weeks पे जाते हैं, Paris, Milan, and it's so sad and it's also like really surprising to see कि India जैसे market को कभी-कभी सिर्फ 1 या 2 सीट दी जाती है, जबकि बाकी काफ़ी countries को 15-15 सीट दी जाती है. तो we still have a long way to go, but also things are getting so good for us right now. In the past couple of years, you must have noticed that, you know, like Alia, Deepika, Priyanka, they've all become faces of these major brands. So we're getting there. I feel India is on the map when it comes to fashion, but we still have a long way to go. But from my journey itself, I've been doing this for 8 years. I've seen such a big difference. You know, कि India को अभी recognition मिल रही है. So many people know our Indian designers. Like so many of our Indian designers are showcasing abroad, right? Like Rahul Mishra, there's Gaurav Gupta. They're killing it. Like Beyonce's of the world are wearing a Gaurav Gupta. It's so like it's such a good feeling. So that way I feel like we're doing great as a market for fashion, but still have a long way to go. Do you think being fashion obsessed एक अच्छा trend है? क्योंकि कहीं ना कहीं वी नो कि फेक्स बन रहे हैं. फेक्स को लेके लोग अभी बोलते हैं एयरपोर्ट में आपको पकड़ेंगे, और वो हो भी रहा है. What does Juhi feel about this entire trend? आपको क्या लगता है? I feel like it's very unnecessary. I feel like you don't want to put yourself through that mental pressure of trying to be something that you're not. Rather, be very comfortable in your own skin and be proud of that. Like, I wouldn't want to... I would really discourage it, you know. Like, just enjoy fashion and enjoy it to a point where you can, but don't be obsessive, because कोई भी चीज़ में obsessive होना अच्छी नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है. Like fashion हो या कुछ भी हो. तो what was your first favorite buy of a brand, and आपको लगता है आज भी आप उसको, because the way you dress up, I can tell you're someone who upcycles and reuses things. No, absolutely. तो और हम लोग कैसे होते हैं, इस पे इतना खर्चा हुआ है, इसको मिनिमम 50 बार यूज करना है ना? No, I agree. In fact, अभी I feel like as I'm getting older and as I'm, you know, obviously spending my own money, I've realized कि when it comes to clothing, मुझे भले ही वो थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हो, बट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मैं सालों तक यूज़ कर पाऊँ. तो यू नो लाइक अ गुड ब्लेजर और लाइक जीन्स, इवन बैग्स, थिंग्स दैट यू कैन यूज़ फॉर ईयर्स एंड ईयर्स इज सस्टेनेबल फैशन. एंड मैं उस तरफ जा रही हूँ. जब मैं छोटी थी तो ऑब्वियसली आई वुड वेयर समथिंग वंस एंड ट्वाइस एंड बस हो गया. बट अभी आई डोंट एंजॉय डूइंग दैट. How nice. You would be very happy to know कि Radio City is doing something beautiful. आपके घरों से ऐसे कपड़े लेकर वो बिजली बनवा रहे हैं through this organization called Recircle.in. And वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे ये जो सामान है उसको recycle करके they're actually taking the proceeds to an orphanage as well. You would be so happy to know this कि जो ये लोग प्यार से, खुशी से, ये जानते हुए कि ये recycle होगा, वो दे रहे हैं. What do you think about this initiative? हमारा जो है जगह बनाओ is what we're calling it. घर पे भी जगह बनाओ, दिल में भी जगह बनाओ. No, absolutely. कैसे लगा आपको ये initiative? I loved it. I mean, obviously you guys do such amazing things, and this is a fab initiative. I want to be a part of this as well. Of course. So I mean, it's great. हम आपके घर आएंगे. हाँ, please आ जाइए. तो imagine कपड़ों से बिजली बनना. I have never even heard of something even like I this. haven't. Yeah, I'm gonna read more about this. बिल्कुल. Recircle guys, great job. Everyone seems to be very happy. In fact, हमारे listeners ने जो पहली बार उन्होंने दिया, they're feeling so happy. Yeah. So imagine like doing something for others can make you feel happy. It's such a good feeling. Absolutely, absolutely. Because I think that we're in a phase of transition in India जहाँ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग self-employed होना चाहते हैं और कम लोग offices जाना चाहते हैं. जूही, how did you manage to become an entrepreneur despite कि आपका इतना experience in a office setup नहीं है? Correct. वो डिसिप्लिन आपने कैसे लाया? I feel like obviously it's all trial and error, right? मैंने जब Arabella start किया था, मैं बहुत obviously I was pretty young. I started the brand when I was 22 and I learned a lot. You know, over the years मैंने बहुत mistakes की है, काफ़ी losses भी देखे हैं, but now अब जाके I think 2 साल पहले we've become a profitable brand. तो बहुत time लगता है. Business is not a joke. It needs a lot of your time and energy, and in fact my husband is also a co-founder with me, so I feel like घर पे भी हम बस business की बातें करते हैं. तो yeah, exactly, but I think it's great, you know. I love what I do. I'm very grateful,
and bas like it's all about trial and error, and you learn from your mistakes. 3 trends that we should be wary of आने वाले 6 महीने में, because I hope we'll catch up with you after that. But क्या है वो चीजें जो आपको लगता है लोग अब बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे इसकी तरफ? जैसे एक टाइम पे एक बबल ड्रेस था, लोग स्कर्ट से भी बबल ड्रेस बना रहे थे. What's your take on what's coming up? You know, I feel like we're in a time right now where trends aren't like, I mean, of course, there are a lot of trends, but also like you can wear anything you want and it can be exactly, you can make it trendy. But that's at any given time. Exactly. But अगर एक ऐसी कोई चीज है जो आपको पता है अभी बहुत अलग है, हटके है. I mean, there are certain colors, right? Like बीच में in terms of colors, there was this butter yellow and there's maroon. Like those kind of colors are really popular right now. Anything textured is doing really well. And also minimalism. Like पहले, you know, people wanted to go all out and wear like statement pieces, but anything minimal is looking great. And you saw a lot of that on runways this time. Absolutely. In fact, minimalism पे मैं आने ही वाली थी कि कुछ मेरे friends internationally, they have all the money in the world. They're also dinks, but they still don't care to spend so much and saying we want to be minimalistic. तो उसकी essentials क्या होते हैं? 5 essentials for a minimalistic wardrobe. क्या है? Stay away from logos. You know, like back in the day when people just started in putting money in like luxury brands, it was all about like logos everywhere. But I don't think you need to have logos everywhere to show that you're wearing something from a luxury brand. It's like, you know, if you know. So I think that's the best way. And obviously invest in things that are really good quality. Even if it's expensive, you probably won't even know that it's super expensive, but because it looks so good and because it's such good quality, it's going to last you for years and it's always going to look great. You know, what about the bags and the shoes? क्योंकि वो एक चीज है जो आपको थोड़ा you want to accessorize smarter. I agree. In fact, bags obviously so expensive nowadays, and anyone that buys a luxury bag is obviously a very special experience. So always invest in the iconic pieces, right? Like the classics. So for example, if you go to Chanel, there's a classic flap. Or if you go to a Louis Vuitton, they have the Neverfull. So every brand has its own set of classics. So try to invest in those because they'll never go out of trend. काफ़ी बैग्स आते जाते रहते हैं जो यू नो आज ट्रेंडी है कल नहीं रहेंगे, तो दे डोंट अप्रिशिएट. इनफैक्ट द आइकॉनिक बैग्स अप्रिशिएट इन मनी आल्सो, सो इट्स काइंड ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट. ओह माय गॉड, दैट्स गुड, राइट? लाइक दैट्स रियली इन्वेस्टिंग. खाली उसको मेंटेन करने में फिर आप माय हस्बैंड विल डिसएग्री दैट इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट. तो आप उनको कवर्ड अप रखते हो? हाउ ऑफन डू यू एयर देम आउट? क्या करते हैं आप? I don't like to baby my bags honestly, because at the end of it is a bag, so use it like a bag. So I don't overdo it unless it is some sort of a fabric that needs a lot of care. But if it's I don't really do much that way. Just like keep it safely and just make sure that dents and scratches नहीं आ रहे हैं. That's about it. मुंबई का फैशन स्टेटमेंट बताइए भैया. यहाँ तो गर्मी 24/7 और 12 months a year ही चलती है. मुंबई का फैशन पैटर्न बताइए that this suits मुंबई. क्या है जूही के हिसाब से? I don't know about Mumbai, but when it comes to my personal style, it's basics. Like if you catch me off guard, I'll always be in a pair of jeans, a tank top, a nice airy t-shirt. So I think basics work best for Bombay. And of course, you can have fun with fashion. I don't think in fact, because it's a tropical city, you can kind of do more. You know, dressing for the summer is also a lot of fun. So I feel like, again, it depends from person to person, but basics do the best. ये बेसिक वर्ड इतना सुन लिया है, बेसिक में जाना पड़ेगा. जूही क्या खाती है to stay like this, or is it a natural gift? नहीं, it's actually, you know what, people think you know, I'm lucky that I've gotten back to. It totally seems like genetics. But it is a lot of work. In fact, like when I was growing up and I was in school, I was a chubbier kid, like because I loved indulging in my McDonald's and whatnot. So it took a lot of work. Like I had to go to the gym, I had to eat right. So I feel like after a certain point now you adapt a lifestyle. So over the years, eating healthy has become a very normal thing for me. It's not like if I indulge, it doesn't feel normal for my body. Then the next day I want to eat थोड़ा clean. Okay, but पाव भाजी, पानी पूरी कल ही खाए थे मैंने सब ये सब. तो Sundays को मैं सब खाती हूँ. Like it's my husband and मेरा rule कि Sunday को हम छोले भटूरे खाएंगे, पाव भाजी खाएंगे, जो खाना है खाएंगे. But over the week I like to just eat घर का normal खाना and I don't eat salads and all that every day. I eat normal घर का खाना. That's the rule. But everything in the right proportion and go work out now. Like keep yourself active. So do anything that you like. Like I love running.
So I like to go for runs sometimes. I've been doing Pilates for a while now. Pilates, tell us about that. Yeah. So I mean, because my frame is leaner, I feel it's worked better for me because Pilates focuses on smaller muscles. So it's easier to get toned up through Pilates. But I also do functional training. So I do a bit of everything, whatever I enjoy. There are certain things that I didn't enjoy. Like I tried kickboxing. I didn't enjoy that, so I stopped. So just do what makes you exactly do what makes you. I love dancing also. Sometimes I'll just shut the door in my house and just keep dancing. That's my cardio. मुझे लगा ये बोलेगी अपने बच्चे के पीछे भाग रही है लेकिन उसके भागने वो तो मतलब उसके वजह से तो मुझे muscles आ गए because I'm constantly holding Aru, so I have muscles now. So I think I just have one question before you leave us, which is that I feel fashion is something we want to enjoy, but it's giving us more stress. Sometimes इधर जाना है ये पहनना है. I would like you to tell my listeners और जो लोग ये देख रहे हैं कि stress less, enjoy the process more. वो कैसे होता है? Absolutely. I feel, you know what, with fashion, discover what your personal style is and embrace that. Don't try to be someone else or don't emulate someone's personal style because then it's not going to work for you, right? Yeah. So discover what looks good on you and stick to that. Do more of that and you're going to look great. And you will always stand out if you're doing your own thing. Yes. ये नहीं कि उसने पहना है तो मैं भी ये पहन लेती हूँ. मुझे कभी-कभी वो ज़्यादा copy paste लगता है और सारे लोग फिर same लगने लगते हैं. Right. If you know what I mean. Right. Thank you so much, Juhi. I can't thank you enough. I guess all of us are trying to increase our likes and numbers and followers on the social media. So you want to give us a tip before leaving? You already told us what works, but agar no, but you know, my tip will be don't get into that whole number game. It's not necessary. Just be happy with the community that you have, and if people resonate with your style or whatever that you do, they will follow you and just enjoy the process. So nice. ये बहुत ही ज़्यादा individualistic चीज़ जो उन्होंने कही है ना, इसी के वजह से ये एक क्या बोलते हैं, she is a gem herself. Thank you for shining your light and thank you for sharing your stories with us. Beautiful. Thank you, Archana. Radio City, रग रग में दौड़े City.